on the responsibility to serve as an initiating guru, initiating spiritual master. We heard the other day how Prabhupada was saying, I want all my boys and girls, everyone should become guru. Just yare dako tare koho Krishna upadesh, amara gai guru hoy tare desh. So I remember Maharaj and I used to travel many places throughout India together. Then he took sannyas, and now he's furthering his commitment to Srila Prabhupada's ISKCON society to take the responsibility of giving Diksha initiation for those who are candidates. You ready for it? Okay. ISKCON Governing Body Commission Society, Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oath of Alliance. I, Bhakti Aisrava Vaishnava Swami, sannyasi from India, make the following oath. First, I accept His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada as the founder Acharya and supreme authority of ISKCON. I will follow his teachings, instructions and directions. Second, I accept the Governing Body Commission of ISKCON as the ultimate managing authority of ISKCON, as directed in Srila Prabhupada's last will and testament. Third, I will abide by the society's spiritual rules, namely no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating, and chant a minimum of 16 rounds of Mahamantra Japa every day. I will follow the principles set forth in Srila Prabhupada's books. 4. I accept that all of ISKCON's funds, assets and properties under my control or direction, including anything ISKCON may have acquired under my direction, is the sole property of ISKCON, and in the event of my death, resignation or other relinquishment of all ISKCON responsibilities, all these shall accrue solely to ISKCON, and at all times I shall have no claim on them whatsoever. Fifth, I will be guided by the directions of ISKCON's management, cooperate with the local GBC representative, and fulfill my duties in a serving spirit, never intentionally acting against ISKCON's interests. 6. I will maintain the spiritual programs, standards and teachings established by Srila Prabhupada in the projects and with the devotees placed in my care. I further agree not to involve the society or those devotees placed under my care in any activities contrary to the above mentioned principles. Dated 30th 8 2024. Signature and witness. It is another oath. ISKCON Governing Body Commission Society, Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oath of ISKCON Guru. I, Bhakti Ashrava Vaishnava Swami, sannyasi from India, make the following oath. First, my personal mission as Guru in ISKCON shall be the same as the mission of Srila Prabhupada, to flood the world with transcendental literature like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and as Srila Prabhupada said, to do as I am doing in establishing ISKCON all over the world. Second, I recognize the GBC as the ultimate managing authority in ISKCON,
I support the GBC system and will follow the GBC as Srila Prabhupada desired. Third, I recognize that a bona fide guru is first of all a bona fide disciple, and that in all my actions I shall remain surrendered to Srila Prabhupada's orders and the orders of his authorized representatives. Fourth, as Srila Prabhupada ordered his followers to serve with ISKCON under the GBC, I acknowledge that for me to represent Srila Prabhupada in my service as a guru in Parampara under his order, I can do so only as a member of ISKCON. If I leave ISKCON, I shall no longer act as guru. Fifth, as a spiritual master, I shall always set a Krishna conscious standard for all devotees by my behavior, which shall be strictly regulated and exemplary at all times. As a public representative of ISKCON, I must always conform with ISKCON policies and never act in any way to weaken or jeopardize ISKCON's worldwide mission. I shall not act in a way to diminish any person's faith in Krishna consciousness. Sixth, I shall scrupulously study the review all aspiring disciples and grant initiation only to qualified devotees so as to preserve the seriousness and sanctity of initiation. I shall only accept as disciples candidates who are qualified according to the standards and procedures established by ISKCON law. 7. I shall give my disciples directions and examples in strict conformity with those of Srila Prabhupada. I shall teach all my disciples that they are part of ISKCON. Dated 30th September 2024, signature with witness. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. So I think for witness Panchagoda Prabhu and So we're very happy and excited that Srila Prabhupada's mission is spreading nicely. And every point that the GBC pointed out is faithfully following GBC, following Prabhupada's mood, which are taught in his books. And I've observed Vaishnava Maharaj for almost 40 years, that he's dedicated to the preaching mission. And he went through the process in a very systematic, open way of taking sannyas and preaching and representing Srila Prabhupada and the society in a very positive direction for spreading Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan mission. So we give a big Haribol. Haribol! Prabhupada Maharaj. We are overjoyed to know that Krishna consciousness is spreading nicely and by qualified personalities that we can take shelter of. This is the process to take Ashraya, of those who are also taking Ashraya. So it's a chain of disciplic succession. And it's a glorious process in which we can develop our creeper of devotional service. And so there are Diksha Gurus, Shiksha Gurus, good association, and by taking shelter of the Vaishnavas, we are blessed. We thank you very much, Maharaj, for taking up this duty on behalf of Srila Prabhupada, and I'm sure Srila Prabhupada is very happy.
हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हिंदी में बोलो इंग्लिश में? हिंदी दो। So we are in the disciplic succession in the Parampara Brahma Madhya Gaudiya Parampara. As we know, in ISKCON, Srila Prabhupada was both Siksha Guru and Diksha Guru for all his disciples and who, for all members of ISKCON, and he is preeminent Siksha Guru for all the time coming in ISKCON. So now we have like two, there is Diksha Gurus and there is also Siksha Gurus, Siksha Parampara. So we are the GBC, just they recognized some devotees as initiating spiritual master, that is Diksha Guru. So yes, so now His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnava Swami is now recognized by GBCs and as a Diksha Guru in ISKCON. So he will definitely perform with that responsibility, that service perfectly with the blessings of all of you, the Vaishnavas, and his spiritual, our spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami's Vyas Puja day today, and it is an auspicious day, and he is taking the vow of, he took the vow to become a Diksha Guru. Definitely our Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, and Divine Grace Abhay Charana Aravind Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all other senior devotees in ISKCON, Prabhupada disciples and sannyas, they all definitely pleased with him taking this responsibility. So he is an ideal example for the generation is coming, especially in Vrindavan. We have many other sannyasis also. His Holiness Gopendra Krishna Swami and His Holiness Radha Shyamananda Maharaj, His Holiness Janardhan Swami, Bhakti Anugrah Janardhan Swami, and they will take further responsibility in the same example. So I am just praying to Gaur Nitai Krishna Balaram and Radha Shyam Sundar Lalita Vesakha to bless, specifically bless us, or bless His Holiness Gopal, I say His Holiness Bhakti Ashraya Vaishnava Swami to perform his service perfectly according to the desire of Srila Prabhupada and GBC and other Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां। जय श्री प्रभुपाद और प्रभुपाद सीनियर डिसाइपल एंड सन्यासीस। तो आज इस शुभ दिन में प्रभुपाद अल्टीमेटली हमारा शिक्षा गुरु है, और इस शिक्षा के आधार पर प्रभुपाद जी कूर्म ब्राह्मण को उदाहरण देते हैं कि गुरु बनना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ये प्रभुपाद की शब्द है, गुरु बनना बड़ी मुश्किल की बात नहीं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हम लोग ओत में भी सुने हैं, तो इसमें श्रीमद् भागवत
और श्रीमद् गीता के आधार पर शिक्षा जो है, इसी शिक्षा प्रभुपाद के आधार पर शिक्षा देना है। और विशेष करके मैं जब से आया हूँ इस्कॉन में, महाराज जी के चरण में आश्रित हैं और इनकी स्वभाव पहले से ही गुरु है। हमेशा कुछ ना कुछ चेला बना ही रहता है, ऑलवेज सम चेला महाराज, ऑलवेज। तो पहले से ही गुरु स्वभाव है। और हम लोग देख रहे हैं प्रभुपाद के सीनियर डिसाइबल जो गुरु है वो भी एक एक करके जा रहे हैं। सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारा दोनों सामने जो सन्यासी है, और मेरे पहले से और एक ही थे जो ब्रह्मचारी रूप में वृंदावन में जैन करके, ये दो सन्यासी है, और श्यामानंद महाराज है वो भी सन्यासी है। इससे पहले मेरे आगे मेरे जैन से पहले और कोई नहीं है जो है ब्रह्मचारी रूप में, ये दो सन्यासी है। आज पहले महाराज जी ओथ लिए थे और वैष्णव महाराज जी अभी ओथ लिए हैं, दोनों अभी गुरु है। और ये बड़े उपकार होंगे। भारत में गुरु की कमी है, बहुत कमी है, तो जरूरी है। और महाराज जी की स्वभाव भी बहुत सरल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य ग्रहण करे और इस भार को संभाले और इस इस्कॉन को जैसे प्रभुपाद की एज इट इज इस धारा को आगे बढ़ाए। और इससे हमारा उनकी चरण कमल प्रार्थना है, हम लोगों सबको कृपावारी वर्षित करे। जय परम पूज्य वैष्णव महाराज के, परम प्रभुदानंद महाराज के, जय पंचगुरु प्रभु के, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। That was a paid advertisement. Srila Prabhupada ki jai, Holy Ekadasi ki jai, Nitai Gau Premanandi, Hari Hari Bol. Ho gaya? Or you want to say something? ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप सबको पता है कि आज ऐसे ही हरिवासर है, अन्नदाय एकादशी और द्वादशी युक्त एकादशी, महाद्वादशी। और उसके ऊपर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि। उन्होंने प्रभुपाद के द्वारा अधिकृत होकर के इस मंदिर निर्माण में आए थे। 75 से भारत में आए अधिकार प्राप्त करके, और उसी 75 में कृष्ण बलराम मंदिर की प्रतिष्ठा हुआ है। इस कृष्ण बलराम मंदिर में शुरू से, जैसे गोपेंद्र कृष्ण महाराज बताए, प्रभुदानंद महाराज, और इसके बाद मैं भी इसी मंदिर में आज न्यू भक्त, नए भक्त के रूप में इसी मंदिर में जॉइन किए थे। हमारा शिक्षा दीक्षा जो भी कुछ सेवा सब कुछ इसी मंदिर में हुआ है, कृष्ण बलराम मंदिर में। तो इसलिए आज कुछ दिल्ली के भक्त बोल रहे थे नहीं आप ओथ दिल्ली में लेना चाहिए महाराज के, लेकिन प्रभुदानंद महाराज और यहाँ के अथॉरिटी बोले कि नहीं, यू आर फ्रॉम इस्कॉन वृंदावन, आप इस्कॉन वृंदावन का है तो आपका ओथ टेकिंग इस्कॉन वृंदावन में ही होना चाहिए। तो
ये गुरु दायित्व ये बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस इस्कॉन संस्था का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो। प्रचार प्रसार करने के लिए गुरु दायित्व निभाना होता है। तो उन्होंने स्वयं इस संस्था को स्थापना करके उनके नेतृत्व में उन्होंने अनेकों को इस गुरु दायित्व दिए थे और इस परंपरा अभी चलती आ रहा है। उसी परंपरा के अनुसार उनके प्रियजन श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की इच्छा था कि कम से कम प्रभुदानंद सरस्वती महाराज और मुझे भी आज्ञा किए थे कि आपको भी ये दायित्व उठाना चाहिए। जब महाराज थे उपस्थित शरीर में तो कई बार हमको बोले थे। तो अब महाराज तो प्रैक्टिकली रहे नहीं, लेकिन उनका आज्ञा के अनुसार आज ये शपथ पाठ लिया जा रहा है। महाराज ले चुके हैं और आज उनके आदेश की इच्छा के अनुसार लेते हैं। तो मैं श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताय गौर सुंदर, श्रील प्रभुपाद और यहाँ उपस्थित जितने भी भक्तवृंद है, सीनियर जूनियर जो भी जितने भक्तवृंद है, सभी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कृपया आशीर्वाद प्रदान करें ताकि ये विशेष गुरु दायित्व को मैं निभा पाऊँ। बस यही प्रार्थना है सबके चरण में। हरे कृष्ण। His Holiness Gopal Krishna Maharaj Ki Jai. His Holiness Bhakti Ashray Vaishnava Maharaj Ki Jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.